Photochemistry, Unit 5, BSc final year student. Department of Chemistry. We know that energy in the form of three types: heat, electricity, and electromagnetic irradiation. Means this is the three form which we know about the energy. Then what is meant by photochemistry? Photochemistry is a chemical reaction accompanied with the light. Means we can say that photochemistry is the study of the interaction of electromagnetic radiation with matter, resulting into a physical change or into a chemical reaction. Means what happens in that photochemical reaction? Action of light and chemical change is occur. And action of light converted into chemical change. Light induced reaction, this is called as. Chemical reaction is the light emission, and that is called as a chemoluminescence. Examples of various photochemical reaction which we know about that. First is the photosynthesis of plants, means plant which absorb the radiation and use the chlorophyll and the water from the roots. They convert all these things into their foods. This is the best example of photosynthesis reaction in a plant. Second is the formation of ozone from oxygen in atmosphere. This is a atmospheric reaction which is occur in the atmosphere and formation of ozone from oxygen. Next one, bioluminescence in firefly. This is also the photochemical reaction which is occur in the presence of light. Phototropism means when we already know that when the sun goes from one side to another side, the orientation of plants toward the direction of sunlight, this is also the photochemical reaction. Treatment of jaundice of newly born babies. This is also the treatment, this is also the photochemical reaction which is occur. Then photopolymerization. This is also the example of photochemical reaction. Then what is meant by photochemistry? Photochemistry deals with the study of photochemical reaction. This is one of the fact. Photochemical reaction are caused by the absorption of light radiation, means photon, from the visible ultraviolet region, means 200 to 800 नैनोमीटर इन दैट ये रीजन में जो होता है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है जब रिएक्शन जब कंपाउंड्स या कोई भी सब्सटेंस रेडिएशन एब्सॉर्ब करता है विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन में ही ये रिएक्शन होती है. Then the third fact is photons supply the necessary energy to the reactant. Then the molecule get excited to produce a product. Means photon जो होते हैं वो इस अमाउंट ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है जिसके कारण वो रिएक्शन कंप्लीट होती है. नेक्स्ट फैक्ट इज सम ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज सेक्शन एंड देयर वेवलेंथ. These are this ultraviolet 100 to 400 nanometer, visible light 400 to 700 nanometer. These are the region where this is the light which is observed. Then the near IR, infrared 700 to 2500 nanometers. These are the regions of that lights. Then wait, this is the electromagnetic spectrum, means this is the range: radio waves, microwaves, IR, UV, visible, X-ray, gamma rays. This is about the photons of electromagnetic radiation of many wavelength interact with the chemical species in various ways. What happens if we say that it is a substance? In a photochemical reaction, interaction of radiation with the matter, if it is a matter, when light fall on a matter, then what happens? There is one thing is happen here. Some light is reflected, some light is absorbed, and some part of light is transmitted. This is the interaction of radiation with the matter. Photochemistry is concerned
with the part of light which is observed which is absorbed मीन्स फोटोकेमिस्ट्री जो होती है वो किससे रिलेटेड है, तो यहाँ से जो एब्सॉर्ब होती है उससे ही रिलेटेड है, नॉट रिफ्लेक्टेड नॉट ट्रांसमिटेड। मीन जो ये जो रेडिएशन जिसने वो मैटर ने एब्सॉर्ब की, वो एब्सॉर्ब की हुई रेडिएशन उसमें क्या होता है, वो कंपाउंड में क्या चेंजेस करता है, उसके बारे में ही आप अपने सभी को स्टडी करना है। देन वी कैन से दैट दिस इज द फोटोकेमिकल रिएक्शन। What happened in that case? Visible and ultraviolet region. ये जो रीजन है 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर रेंज वाली वेवलेंथ वाली जो रीजन लाइट रेडिएशन होती है वो इन्वॉल्व इन द ब्रिंग अबाउट द फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन में वो इन्वॉल्व होती है। क्या होता है उसमें? ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट में द मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट they absorb the radiation and goes into the excited electronic state. What happen in that case? The light radiation of suitable energy absorbed by the matter, जो एनर्जी उस मॉलिक्यूल को सुटेबल होती है, वो टोटल एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं करता है, जो सुटेबल होती है वही वो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, और बाकी एनर्जी जो होती है वो एक तो ट्रांसमिट होती है, एक तो रिफ्लेक्ट हो जाती है। जो रेडिएशन उसने एब्सॉर्ब की उस रेडिएशन में क्या करता है, फिर वो एटम और मॉलिक्यूल गेट एक्साइटेड एंड एक्साइट में ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट में जब भी वो मॉलिक्यूल जाता है तो उसमें ये बातें होती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेशनल वाइब्रेशनल चेंज, रोटेशनल चेंज और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टेक्स प्लेस। म्हणजे ये जो लेवल होता है ग्राउंड स्टेट में वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होती है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक और ट्रांसलेशनल वाइब्रेशनल चेंजेस, रोटेशनल चेंजेस और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होता है। इस तरीके से वो एटम एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। व्हाट हैपन इन द फर्स्ट प्राइमरी प्रोसेस? प्राइमरी प्रोसेस में क्या होता है? फर्स्ट इन द प्राइमरी प्रोसेस दे मे गेट डिसोसिएटेड यील्डिंग एटम मॉलिक्यूल और फ्री रेडिकल बाय द एब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। प्राइमरी प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल होता है, ये जो मॉलिक्यूल वो रेडिएशन मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब करता है, ये रेडिएशन एब्सॉर्ब तो एब्सॉर्ब करने के बाद ये जो मॉलिक्यूल का कन्वर्शन होता है वो एक तो फ्री रेडिकल में होता है, एटम में होता है या सिंपल मॉलिक्यूल्स में होता है। वो एब्सॉर्ब करने के बाद ये प्राइमरी स्टेज में होता है। बाद में क्या होता है? सेकेंडरी स्टेज में। सेकेंडरी स्टेज में होता है जो एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल्स गया है, जो ग्राउंड स्टेट में जो है वो एक्साइटेड स्टेट में गया, वो एक्साइटेड स्टेट वाला एटम मॉलिक्यूल और फ्री रेडिकल प्रोड्यूस which is produced in a primary stage react further to give a rise to a different product। means excited state में गया हुआ मॉलिक्यूल वो फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, आपको जो प्रोडक्ट होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन में वो आपको मिल जाता है। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? दे केमिकल रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, one dark or thermal reaction। The reaction takes place in the absence of light are called as a dark or thermal reaction। means जो reaction light के absence में होती है उसे dark और thermal reaction कहते हैं। These are the ordinary chemical reaction which are influenced or induced by temperature, concentration of reactant, presence of catalyst, etc. except light radiations। मीन्स थर्मल रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, तो वो किससे रिएक्शन इंड्यूस होती है, मीन शुरुआत कौन करता है? एक तो टेम्परेचर वो प्रोवाइड करना पड़ता है आपको, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होता है उससे वो रिएक्शन की शुरुआत होती है, या एक कैटलिस्ट आप प्रोवाइड करते हो जिसके वजह से वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के तरफ जाता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के तरफ जाता है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट होते वक्त वो क्या होता है, तो उसके लिए कुछ इनिशिएटिव उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए होने के लिए वो टेम्परेचर, एक तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये बातें होनी चाहिए कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट होने के लिए। सम एग्जांपल्स आर गिवन फॉर द डार्क रिएक्शन। N2+3 H2 मॉलिक्यूल NH3 तैयार होता है, अमोनिया तैयार होता है, H2+I2 HI तैयार होता है, दो मॉलिक्यूल, PCl5 ये PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट होता है। ये डार्क और थर्मल रिएक्शन यहाँ पे होती है। तो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डार्क एंड थर्मल रिएक्शंस आर,
दिस रिएक्शन नीड कोल्यूजन फॉर द एक्टिवेशन, मीन्स ये जो डार्क और थर्मल रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होना है, उसमें कोल्यूजन होता है। एक्टिवेशन मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, ये ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए जो ग्राउंड स्टेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोल्यूजन होता है फॉर द एक्टिवेशन। एक तो ये प्रोसेस होती है। दे आर डिपेंड ऑन अ टेम्परेचर, एक तो टेम्परेचर पे वो रिएक्शन डिपेंड होती है। द रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द डिक्रीज ऑफ फ्री एनर्जी, एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है डार्क और थर्मल रिएक्शन। नेक्स्ट, photochemical reaction, second type of reaction. Photochemical reaction induced or influenced by the action of light on the system. म्हणजे फोटोकेमिकल रिएक्शन किससे होती है, लाइट के जो सिस्टम में इन्फ्लुएंस करता है, जो सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है लाइट, उससे ये रिएक्शन होती है। एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर डिसोसिएशन, मींस टू HBr molecule is dissociated into HB and Br2, one of this type of photochemical reaction. Second one is the photocatalyst reaction, कौनती है CO2 plus H2O, क्लोरोफिल और लाइट, इनके प्रेजेंस में CH2O plus O2 plus क्लोरोफिल, ये यहाँ पर जो रिएक्शन विच इज ऑकर इन अ प्लांट, ये फोटोकैटालाइज रिएक्शन, लाइट कैटालाइज होता है। Rearrangement, fumaric acid is converted into malic acid. This is one of the reaction which is occur in a photochemical process. Then the combination H2 plus Cl2 converted into HCl. This is also occur in the presence of light. Decomposition, two molecules of O2 converted into three molecules of two molecules of O3 converted into three molecules of O2. Then polymerization. What is happen in the polymerization? N molecules of C2H2 in the presence of light converted into C2H2 by N. This is the photochemical reaction which is occur. Then addition reaction means Br2 plus, this is the molecule where it is added and the formation of this product, and both these reaction is occur in the light, therefore all these reaction are the photochemical reaction. Then what is the difference between thermal reaction and photochemical reaction? Photochemical reaction and thermal reaction. Photochemical reaction, these involve the absorption of light. फोटोकेमिकल रिएक्शन कैसे होती है, लाइट के एब्सॉर्प्शन से होती है। थर्मल रिएक्शन कैसे होती है, थर्मल रिएक्शन होती है दिस इन्वॉल्व आइदर एब्सॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट, एक तो वो लाइट एब्सॉर्ब करता है या हीट इवॉल्व करता है, आइदर वो एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट और इवोल्यूशन ऑफ हीट, इससे वो रिएक्शन थर्मल केमिकल रिएक्शन होती है। नेक्स्ट वन, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। photochemical reaction or thermal reaction, it takes place in dark or in the presence of or in presence of or in absence of light. In the presence of light, it takes place in the absence of light. They are independent of temperature, they are depend on a temperature. Rate of reaction is depend on the intensity of the light absorbed. Rate of reaction is not affected by the interaction of light. Then the free energy change is negative or positive. Photochemical reaction delta G may be positive or negative, दोनों भी होते हैं, non spontaneous reaction है, and the free energy change is always negative. Delta G is always negative in the thermal reaction. This is the difference of a photochemical and thermal reaction. Law of absorption of light. What is the law? When light, monochromatic or heterogeneous light, is induced upon the homogeneous medium, a part of this incident light is reflected, a part is absorbed by the medium, and the remainder is transmitted. Remaining is transmitted. Remainder is transmitted. Some light is which is transmitted. If we can say that, if I denote the intensity of incident light, okay,
I denote the intensity of incident light, which is incident on the matter, on the homogeneous medium. Then IR is the intensity of reflected light. IA is the intensity of absorbed light. IT is the intensity of transmitted light. What is the formula? What is the conversion of all these things into a formula? I, which is the intensity of incident light, is IA, which is absorbed light, intensity of absorbed light, IT, intensity of transmitted light, plus IR, intensity of reflected light. If